Yeah, keep reading. Light, reflection and refraction. Light, reflection and refraction. First chapter in this way. So in this chapter में what we are learning, that light में we are learning two phenomena, right, which we know already. One is reflection, other one is refraction. These two concepts we have to know. Pura reflection we will study detailedly. Then after finishing, then we have to go for refraction part. Okay. Now reflection में we are studying plane mirror reflection and other one is spherical mirror reflection. These two write down properly notes ka. And refraction also we are studying two things. One is plane surface ka reflection, other one is spherical surface ka refraction. Here we will study about spherical surfaces means nothing but lens. We're talking about lenses. So light we started. Yeah, good evening, Srinidhi. Good evening. Time आ जाओ. Light में two concepts we are studying, reflection, refraction. And reflection में again we are studying plane mirror, spherical mirrors. And refraction में plane surfaces and spherical surfaces like lenses we are studying. Notes अच्छे से लिख लो. And I told that book, right? One book also, Evergreen का. वो असल कोई भी पेन पेपर देखो, नोट्स से एक क्वेश्चन भी ज्यादा आया तो आई विल गिव वन चॉकलेट. सर यू टेल मी मेन एग्जाम में सर दिस क्वेश्चन केम, ऐसा कुछ नहीं आएगा, सेम टू सेम आएगा. नोट्स प्रॉपर वे में लिखो, साइंस तो पक्का. ओके चलो हो गया, फिनिश्ड. हाँ नो light. Now tell me what is light? Anybody? Light means क्या? A form of radiant energy that gives us the sensation of vision. Okay. थोड़ा simple language में, तो complicated language प्रॉब्लम सब लोग फील हो जाएगा. हाँ. Anybody? Light. हाँ दिया. On the videos. हाँ. Anything light? Light definition. Light is a form of energy. Okay. Sound is also a form of energy. Then light and sound का क्या difference? Light. Light helps visible. See, suppose when we are in a dark room, the other person cannot see, right? Suddenly, if you see, you can't see. But when you on the light, he can see that person, right? Matlab indirectly, it is a form of energy which enables us to see things around us, right? Simple language में लिखो definition. Light is a form of energy which enables us to see things around us. Okay. Now I'll show one thing. देखो. Light गिरेगा. It will reach to our eyes. Eyes से signals will go to the brain and brain interpret, and it can able to identify that okay, these are the fruits. We can see. Okay, this part we are studying detailedly in human eye next chapter में. Human eye का how we can see the objects वगैरह human eye in colorful world में देखने वाला है. Okay, so light enables us to see things around us, right? Very important thing. Okay, now some more points we'll learn about light. Whether light travels in a straight path or curvature path, zoom बोल के जाएगा और straight path जाएगा. It depends on the surface. Huh? It depends on the surface. Sir, it always travels in a straight line. Always travels in a straight line. कैसा भी एंगल ड्रा करो तो ऐसा zoom बोल के जाएगा लाइट डालने से. Okay, तो लिखो
light travels along the straight path. Point wise लिखो. Light travels along the straight path. మరి light speed can we measure? We can measure the light speed. सबसे ज्यादा स्पीड वही है ना? कितना वैल्यू मालूम है ना? Sir, is it 3 times 10 to the power 8 meters Yes. per second? Yes, correct. 3 into 10 power of 8 meters per second. लिखो. So it travels in a straight path. देखो, speed of light is measurable and constant. We represent speed of light को c. Always c से represent करेगा speed of light in air. Okay, 3 into 10 power of 8 meters per second. In this chapter we are learning two terminologies we will use everywhere in the total chapter one terminology which is nothing but ray of light. What do you mean of ray of light means? Ray of light. बोलो. Hasika, try. Ray of light. So now anything you can tell. Janvi, try करते. Ray of light. मैथ्स में सुना ना रे बोले तो one is fixed point, other one continuously going. That is called ray of light, right? So simply we can tell like this: straight line path of light is called ray of light. Straight line path of light. This only. This is the one fixed point and continuously is going. That is called ray. Straight line path of light is called ray. Sir, are we also supposed to draw that? Yeah. Draw करो. ये वाला draw करो. Yeah. Straight line path of light. Lesson पूरा में we'll use ray of light like that. We don't know. Straight line path of light. One more terminology we are using, which is called beam of light. Beam of light means Multiple rays together. yes. We can tell like this: bunch of rays of light. Okay, like a bunch of rays of light को we call as beam of light. Okay, so these basics we learned about light. Now we are entering into the reflection part. Reflection of light ka part में we are entering. Okay na? Copy it? Yeah. Okay, so this is a reflection. Already you know, anytime you played ऐसा light डाला कभी ऐसा डाला that is called reflection of light. sun से आएगा mirror से zoom बोल के reflection आएगा. So by this seeing this one, can you define reflection of light? When a ray of light hits on a smooth surface and reflects back. Okay. Anybody addition, subtraction कुछ करेगा definition को? Sir, it's the returning of light into the next medium or something. Why next medium क्यों चाहिए? एक ही medium Sorry, in the same medium. Okay. Akash, anything definition? No? Taking reflection of light का same thing. देखो, bouncing back of a ray of light when it strikes the boundary between two different medium through which it cannot pass. So bouncing back of ray of light को we call as reflection of light. Okay. So what is the meaning of boundary between two medium means? देखो, I'll tell you. देखो, this is a mirror. The incident light is coming like this and bouncing back of a ray of light. And this is called boundary. Boundary means it's separating two different mediums. It can be, suppose if you think this is a glass and water. इधर तक पानी है, half filled glass is there, water में. Okay, this is called boundary. It is separating two mediums. कौन सा? Outside is air, inside is water. Okay, so bouncing back of a ray of light when it strikes the boundary between two different mediums through which it cannot pass. We are, मतलब inside में it should not pass.
that medium we are taking. In that way, bouncing back of ray of light phenomenon ko we call as reflection of light. समझ में आया? Like ball ko if I hit on the wall, it bounce back, right? I say same thing. Light also will bounce back. That is called reflection of light. Sir, can you explain the last sentence again? I didn't understand. Which one? This one, huh? Yeah. See, It strikes the when it boundary. strikes the boundary, it strikes the boundary. This is a boundary. Okay. Between two different mediums. So this is one medium, this is one medium. Okay. In this case, mein dekho, outside is air, inside is water. Two different mediums. Right? This is the water. H2O, and this is air. And this is nothing but boundary. Okay. Between two different mediums through which it cannot pass. In this way, it is not passing, right? Again, if it pass, what will happen? You know, refraction phenomena will happen. In this way, we should not consider that one. That's why it cannot pass. Okay, we are talking about. Okay, so bouncing back of a ray of light is nothing but reflection of light. Simple language. Okay. So it cannot pass. No, it cannot pass. Otherwise, refraction ho jayega. That is next phenomenon. We'll talk about. Understood? Okay. Now we have to learn about the loss of reflection of light. Loss of reflection of light. Already from childhood onwards, I think loss pada hoga na. How many loss are there? 10 na 9 na? 2. 2. Yes. और 2 loss का देखने वाले हैं. So उसको understand होने के लिए we have to know little bit about the bouncing back of ray of light. देखो this ray when torchlight से this is a plane mirror मान लो. देखो plane mirror का first initially we are doing reflection through plane surface is only, right? When you incident a light, this ray is called as what is the name we have to give? Incident ray. Incident ray. So hit करने के बाद क्या होगा? Ball को hit करे तो क्या होगा? Bounce back होगा ना? ऐसे ही light also will bounce back. Okay. And this ray is called as Reflected ray. reflected ray. And wherever the meeting, that point is nothing but point of incidence. Okay. Now, I am drawing an imaginary line which is perpendicular to surface. Perpendicular means 90 degrees, right? This line is called as Normal. Okay. Normal in the normal maths mein also normal बोले तो perpendicular वाला surface. Okay. And because loss of reflection के लिए दो basics ये चाहिए. Okay. And tell me what is this angle is called as? Angle of incidence. Yes, very good. Anybody? Sure? This angle is called as angle of incidence, and this angle is called as angle of reflection. Okay? Sure? No, sir. No, wrong. ऐसा नहीं है. Okay. Always exam में bits में ऐसा पूछेगा wantedly. What they'll tell to find the angle of incidence. Okay. So आपको क्या है? Angle between the normal and the incident ray को उन दोनों को बीच का angle only we call as angle of incidence. This is angle of incidence. Angle between the normal and the incident ray. इसका definitions पूरा लिखने वाले आगे. So just diagram के लिए understand होने के लिए मैं draw कर रहा हूँ. Angle of incidence. And how to define angle of reflection? The angle between Normal and reflected ray. is nothing but the angle of reflection. Okay, these basic things you have to know. Then only we can talk about loss of reflection of light. Okay, small diagram you can draw. Now we understanding? भाई काम में बैठेगा विल डिसाइड दैट 1 hour तक विल शुड नॉट टॉक बोल के टॉक हाँ सर now we will see these things. Okay, copy it. So 1 second. Yeah. So exam में suppose this is the given as 30 degrees. So can you tell me what is this angle?
60. 60 degrees ऐसा. So इधर कंफ्यूज करने के लिए वांटेडली सम एंगल देगा, ये देगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस है बोलेगा, ऐसा कुछ बोलेगा. So you should understand. So angle between normal and the incident ray. So whenever any surface is there, you always have to draw a normal. Now try कर सकते हैं जानवी. Loss of reflection of light. Angle of incidence is equal to angle of reflection, and the second one is the angle of incidence and the angle of reflection and the normal all lie in the same plane. Very good, very good. हो गया ये वाला diagram. Now we'll talk about loss of reflection of light. First law, as per Janavi, they told that angle of incidence is equal to angle of reflection. That means which angle? Always any surface on it, angle I is equal to angle R always. This is always true. Angle of incidence equal to angle of reflection. Second one, the incident ray, reflected ray, and normal to the mirror at the point of incidence all lie in the same plane. So incident ray, reflected ray, and normal all lie in the same plane. Anybody explain what is this sentence meaning? Hasika try karega. Like the angle, the ray, instant ray, reflected ray, and the normal all lie on the plane surface or mirror. Not only sentence you're telling, the meaning. Shravya, try कर सकते हैं. का meaning क्या है? The incident ray, reflected ray, and normal are on the same line. अरे sentence same only, right? Sentence मत पढ़ो, sentence मत पढ़ो, meaning बोलो. Meaning का meaning same plane बोलो तो meaning क्या है? Anybody? भवन try करो. So what is that explain? They all lie on the same mirror, like the plane. मतलब meaning क्या है? See, lying same plane. तारिश का try करेगा? Okay. Nothing. नहीं यार, नारों same plane only, same plane बोलते हो same plane. देखो. Sir, is it that the point of incidence is in the same plane? Okay, Sir, same. Same medium. Same plane. Okay, same plane means what is the meaning of same plane? मतलब which plane? Airplane or Same reflecting surface. same reflecting surface. Okay, चलो same. देखो वही है meaning तो थोड़ा समझो. Suppose see this board. This is x-axis. This is y-axis, right? It's a two-dimension board, right? Two-dimension x-axis, y-axis. Okay. इस plane में, suppose इस plane में I am incidenting एक laser light से I am incidenting the light like this, which is on the board only, which is on the same xy plane only, right? What will happen after reflection? It will bounce back in the same plane, matlab xy plane only, not yz plane or zx plane. See, two dimension mein, see, this is x-axis, this is y-axis, this is z-axis, right? Z-axis, okay. If you incident ray in xy plane, suppose this is in xy plane, the reflected ray also will be in the xy plane only. It will not come like this or somewhere. YZ plane nahi aayega. All lie in the same plane always. That is the meaning of that one. Same plane means. Understood? Okay. Hasika, understood? Wala? Same plane. XY plane में. XY. We call this as board को एक plane बोलते हैं. एक XY plane. Okay. चलो कॉपी डा. Now इसका definition से last के exam में. What is incident ray? What is reflected ray? What is angle of incidence? What is normal? How to define normal? It's a perpendicular line. Perpendicular line, half mark out of 1 mark. The line perpendicular to the reflecting surface. 75%. At the point of incidence. Okay, 80%. Imaginary. 1 mark. Okay, imaginary line हम लोग ड्रॉ कर रहे, लाइट नहीं है ना, हम लोग ड्रॉ कर रहे imaginary line. Okay, चलो इसका definitions भी लिख लेंगे. लिख लो. Angle of incidence. Angle between the incident ray
and normal to the surface at the point of incidence is called as angle of incidence. देखते जाओ क्वेश्चंस कैसे आएगा, क्या आएगा, पूरा मैं कराऊंगा, डोंट वरी. Okay, next one is Kabida. So 1 second almost. Sir, should we draw the diagram also? No need. Already once you draw, right? That's enough. Simply angle of incidence दिखाने के लिए ऐसा लगाया. Okay. Next one is angle of reflection. The angle between the reflected ray and normal to the surface at the point of incidence is called as angle of reflection. स्क्रीन लिख रहा ना, पूरा नोट्स नीटली मेंटेन कर लो. Because when I come to the next class में, I will ask all the definitions वगैरह जो हुआ है वो I will ask. Okay, next one. Next one is normal. An imaginary line which is perpendicular to surface at the point of incidence. So normal is an imaginary line. This is the imaginary line which is perpendicular to surface. हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं, इमेजिन परपेंडिकुलर लाइन एक ड्रॉ कर रहे हैं सरफेस से. दैट इज अ नॉर्मल लाइन. डन ना? या. नेक्स्ट. नाउ we'll talk about some image formation by plane mirrors के लिए. प्लेन मिरर देगा? प्लेन मिरर where it is available? प्लेन मिरर देखा नहीं है? Like somewhere बाहर मिलेगा और somewhere you saw प्लेन मिरर्स. In our science labs, sir, mostly. साइंस लैब्स में प्लेन मिरर देखा. ओके. House? ओके. हाउस में नहीं है प्लेन मिरर. सब रेडी होता है ना सुबह सुबह, प्लेन मिरर रेडी होता है ना, वही प्लेन मिरर साइंस लैब में क्यों? ओके. प्लेन मिरर में रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी प्लेन. रिफ्लेक्टिंग सरफेस विल बी, घर में जो लाइट है that only the mirror is there, that is only this only which you are seeing daily. Okay, this is a plane mirror. लैब में कि नहीं? ओके. नाउ इसका इमेज फॉर्मेशन के बारे में we'll talk about small topic है. इसके बाद only spherical mirrors only. Okay, so image formation by देखो, a plane mirror is a mirror with a flat reflecting surface. Reflecting surface is very flat. There is no curvature. ऐसा curvature नहीं. Curvature आए तो that is a spherical mirror.
These are the flat reflecting surface. That's why it is a plane mirror. Okay, definition लिख लो. Sir, are we supposed to draw the diagram? No need of diagrams. First initially draw कर लो. ये वाला लिख लो, definition लिख लो. उसका flat reflective surface. ओके, नाउ इसका इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या होगा देखेंगे. हो गया. चलो, नाउ सपोज यू आर स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ द मिरर. नाउ टेल मी इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज होगा, मतलब उसका इमेज कैसा आएगा, क्या आएगा, इसके बारे में आई वांट डिटेल्स. Sir, it forms a virtual image. Adya, you understood little bit Hindi also, right? I'm mixing. Anytime you not understood, tell me, okay? Distance is the same of how Explain some example में. Distance, what same या क्या same? stay close to the mirror will appear like bigger. If you like stay नहीं, from a certain नहीं, distance. आराम से cool में बोलो. Mirror bigger appear करेगा, क्या explain No, करो? like your image will appear bigger if you're closer to the mirror. And if you No, like wrong. no, No, like the distance is equal. Like distance मतलब वही explain करो. Distance कौन सा equal है? That I want detail में, so that everybody should understand, right? हाँ. how where you stand is like where you get like reflected. Okay, थोड़ा right. हाँ बोलो. It has a upward virtual light. Okay, Shravya, try करो. Sir, virtual and direct. Virtual direct, okay, good. Akash, anything? What is meaning of virtual in virtual image means? It appears behind the mirror, sir. See, हमारा image, if you observe carefully, this is a plane mirror. Okay, we are standing here. Okay, our image will not form on the mirror. Okay, it is formed behind the mirror. How can you prove? How can you prove that it is standing behind the mirror? बोल के? Anybody? That image is called The virtual images form erect images. Okay, how can we prove that? Like, how can we know It that? cannot be whether- taken on a screen. क्या? Virtual image cannot be taken on a screen. Okay, that only. How in mirror में how can we tell that it is a virtual image and erect image, which is virtual image is nothing but is not formed on the screen. Screen का behind is forming. How? Example के through any tell. Where the two rays converge. उतना कॉम्प्लिकेट क्यों? डे मतलब घर में दिखाने के लिए टू रेज कन्वर्स करने के डिफिकल्ट होगा ना. जनरली कैसे होगा? यू कैन मूव, राइट? यू कैन मूव टुवर्ड्स द मिरर. what will happen? The image also will move towards the mirror. That means anytime you saw it like this, when you're moving towards the mirror, mirror से बाहर your image will come and it will say hi. ऐसा नहीं बोलते ना? When you're coming 2 steps forward, the image also coming 2 steps forward. That is not coming from the screen. Okay, so that is virtual image. Always plane mirror से virtual image is formed. First point, virtual image is always erect image. Okay, see, Janvi, when you see the mirror में, whether you will see the erect image or ulta in your mirror में, plane mirror में, घर के mirror में. Erect. See the right, erect only. Always virtual is always erect. Okay, first point. Next point. Any other point about image Lateral formation? inversion. Okay, lateral inversion. Okay, next. Any other points? The size of the image is equal to the size of the object. Very good. Size तो equal है. So कितना size है? Same size ही रहेगा. छोटा बड़ा नहीं दिखेगा जानवी. Same size ही दिखेगा. नहीं तो daily देख कर इतना छोटा दिख रहा है, बड़ा दिख रहा है, कैसा अच्छा? Same दिखेगा. That's why plane mirrors are used. Okay, 3 points. One more, any point? So the distance is same Distance. between the mirror and Suppose I'll put a chessboard here. I moved a coin like this. Okay, so the distance, if I measure the object ka distance, exactly image ka distance from the mirror is same. Okay, if you are moving, the coin also will move towards the mirror, right? So distance of object from the mirror and image from the mirror is same. These are the properties of the plane mirror. Plane mirror में detail का कुछ नहीं है. Only the properties are there in the. Majorly we are dealing with the spherical mirrors. उसी में numericals आएगा, right? Okay. So we'll see the image formation. Last में we'll write through image formation जैसा we'll write. देखो, one is image is formed behind the mirror. This is the object. This is the image. Okay, and this type of image is nothing but which image we call as
वर्चुअल इमेज बोलते हैं. वर्चुअल इमेज इज ऑलवेज नॉट फॉर्म्ड ऑन द स्क्रीन, बिहाइंड द स्क्रीन इज फॉर्म्ड. ओके, ये प्रॉपर्टीज लास्ट में लिखेंगे अभी. ओके, जस्ट अंडरस्टैंड विद थ्रू इमेज के थ्रू. ओके, दूसरा साइज के बारे में, इफ यू सी द साइज एंड इमेज का साइज इज सेम. सेकेंड पॉइंट. नेक्स्ट, हाँ, इफ यू सी मिरर में राइट हैंड ऐसा क्या, तो योर विच हैंड यू विल सी इन द इमेज? So left hand. So left hand. प्रॉपर्टी को क्या बोलते हैं? Lateral inversion. लैटरल इन्वर्शन बोलते हैं, राइट? दैट प्रॉपर्टी को वी कॉल एज लैटरल इन्वर्टेड इमेज. ओके, can anybody draw lateral inverted image of ambulance which we see in mirror में उल्टा, मतलब सीधा दिखने का? anybody draw, ट्राई कर सकते हैं? मतलब आप लिख के, इफ आई पुट इन माई मिरर, ऐसा प्लेन मिरर लगाने से आपको सीधा दिखने का. दैट इज पर्पस, राइट? एम्बुलेंस में देखा होगा ना, आपको उल्टा दिखेगा, सोचेगा क्या भूल गया, क्या उसको उल्टा लिखा, क्या है. बट व्हेन यू आर गोइंग इन कार में, इफ यू सी इन फ्रंट व्यू मिरर में, यू विल सी एम्बुलेंस बोल के दिखेगा. नॉर्मल इफ यू राइट एनी टाइम यू सॉ राइट मिरर में, इफ यू पुट योर नेम आल्सो, इफ यू सी दैट उल्टा दिखेगा आपको, मालूम है ना? हाँ, एनीबॉडी ड्रॉ, कैन सम लेटर्स एम्बुलेंस का यू ड्रॉ सच ए वे दैट लैटरल इन्वर्टेड किया तो मतलब प्लेन मिरर में सीधे दिखने का. तनिष्का, Sir, I'm trying. ट्राई on the video and try. Lateral inverted means simply, इसका lateral inversion means what is meaning that one? Simply if you turn like this, खत्म, that's it. एम्बुलेंस बोल के आएगा. एक एक लेटर का चेक कर सकते हैं. एनीबॉडी देखो, देखते हैं. इमेजिनेशन पावर इंप्रूव होगा इस करने से. सिंपली एम्बुलेंस को ऐसा घुमाए तो एम्बुलेंस दिखेगा, उल्टा दिखेगा तो लाइक उल्टा दिखेगा ऐसा. Sir, I think the B, L, and C might be. first letter will be A would be same only. okay. A is same, ऐसा ही आएगा. अभी मिरर में देखो, ये बाहर में मिरर है तो मिरर देखो, ऐसा देखिए तो ये वैसा नहीं दिखेगा ना, मतलब थोड़ा. Sir, the first letter will be E. हाँ, ई लेटर में आएगा. हाँ, लिख दिया ना तनिष्का, देखो तंदूर में कैसे दिखेगा. ओके, ओके, गुड. Sir, I checked. यू आर यू नो दैट लैंग्वेज आल्सो, लाइक घर में प्ले करेगा वो लैंग्वेज आल्सो. या श्रीनिधि, ट्राई करो श्रीनिधि. माने लिख दिया ना, लिख दिया. ओहो, डेली खेलते हैं क्या सब लोग? आप ये इधर से ऐसे रखो, ऐसे नाम दिखेंगे. ओके, ओके, चलो इसका थोड़ा देखता हूँ. देखो ऐसे देखिएगा, ऐसे. मतलब लैटरल इन्वर्टेड मीन सिंपली क्या है, इसको सपोज स्टिकर मान लो, ऐसा लगा के उल्टा लैटरल इन्वर्ट किया तो एम्बुलेंस दिखेगा. मतलब सपोज यू आर ड्राइविंग इन ए व्हीकल, इन योर फ्रंट मिरर में आपको एम्बुलेंस बोल के दिखेगा. सो वो लोग ऐसे बनाया, नहीं तो देखेगा तो उल्टा दिखेगा तो एक कौन सा है वो उर्दू वाला बोल के छोड़ देगा. इसलिए एम्बुलेंस उल्टा लिखा के दिखाएगा. ओके, दिस प्लेन मिरर. ओके, अंडरस्टूड, राइट? चलो, नाउ वी विल राइट द ऑल द प्रॉपर्टीज व्हिच वी स्टडीड नाउ. ओके, लिखो फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय प्लेन मिरर. फर्स्ट वन इज इमेज ऑब्टेन्ड इज वर्चुअल and direct. Second one, size of the image is same as the size of the object. Height also will be same. And the distance between the image obtained from the mirror is same as the distance between the object from the mirror. And last one, lateral inverted. Uska definition be lateral inversion in a plane mirror means the apparent reversal of the left and right in the mirror image as compared with the object.
Siddharth, understanding, right? Yeah. जस्ट बाय हार्ट जैसा मत करो, अंडरस्टैंड करके किया तो आपको क्वेश्चंस करने समय आज मजा आएगा। अरे ये बोल के, ये तो नाम के वजह से बाय हार्ट करके करके वो करके मत करो। आदिया, ओल्ड टॉपिक्स का मैथ्स का वी स्टार्टेड लीनियर इक्वेशंस, वो एक बार इट इज वेबसाइट में अवेलेबल है। ओके, सो इफ यू सी दैट ओल्ड वीडियोस का, इफ यू सी सो दैट आपको क्लास में और भी आ जाएगा। नेक्स्ट अगेन व्हेन आई डू द मैथ्स, मैथ्स थोड़ा ज्यादा कंसंट्रेट करूंगा इनिशियली, बिकॉज थोड़ा आगे निकलेंगे। ये तो इजी है, टेंशन मत ले लो, साइंस का टेंशन नहीं है। सो या वो देखकर So रेडी। can you say the website again? आई सेंड राइट लिंक ऑलरेडी। उसमें एक्चुअली कोर्सेस बोल के रहेगा, वेबसाइट आई विल सेंड यू चाहे तो। कोर्सेस बोल के रहेगा, मिनिमम अमाउंट रखा है एक्चुअली 300 रुपीज कुछ रखा इनिशियली, सो दैट फॉर 1 year इट विल बी देयर। all our class recording videos will be available, notes also available, even formula sheets also I'm putting, even tests also, what are the tests in that only I will put, so that you open करके आपको टेस्ट लिखने वाला है इधर क्लास में भी चैप्टर होने के बाद। ओके, हाँ कमिट। So we should also write the lateral inversion. हाँ डेफिनेशन लिख लो। apparent reversal of left and right in the mirror image as compared to object. टाइमिंग्स का 6:15 क्यों रखा बोले तो सम स्कूल्स थोड़े दिन के बाद पोर्शन नहीं हुआ बोल के दे विल टेल टू स्टे आफ्टर स्कूल। देयर इज अ प्रॉब्लम दैट टू मेजरली चेरक पीपल, यू नो, लास्ट में दे विल टेल टू स्टे सम टाइम 5:30 आने तक 6 तक आ जाएगा। सो बेटर टू हैव दिस टाइम, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगा लास्ट में। कॉपीड So 1 minute. क्या करेगा। आज का आदिया आपका राइटिंग दिखाओ एक बार, नोटबुक। नो ओके, थोड़ा इधर उधर जा रहे हैं ना। या नो प्रॉब्लम। ओके चलो, नाउ विल गो फॉर द प्लेन मिरर का खत्म कहानी, इधर तक कहानी डन प्लेन मिरर का। नाउ वी हैव टू गो फॉर द स्फेरिकल मिरर्स का। सब लोग हो गया? चलो, now we'll go for spherical mirrors. Spherical mirrors we are using in many places, right? Like car ka rear view mirrors, you know, like both in different you know, traffic also, when you know, एक gully to other gully when you're going also they will put one spherical mirror so that they can see this object somewhere, कुछ vehicle आ रहा है क्या, we can see everything, you know, mirrors only, right? Spherical mirrors. Okay, now we'll see what is spherical mirror. Define spherical mirror. Anybody? Spherical mirrors. Mirror with a curved reflective surface. Yes, curved reflective surface is called spherical mirrors. Names are very spherical, right? Mirrors whose reflecting surfaces are spherical are called spherical mirrors. Like, you know, plane mirror में flat surface is there, right? Yes, spherical surface, spherical reflecting surface. We have basically spherical mirrors का, if you see, हो गया, देखो
Now देखो, this is a spherical, like you can imagine this spherical surface. इतना बॉल है, एक फुटबॉल जैसा. ओके, सो ये स्पेरिकल सरफेस है. ये मान लो ये पूरा आपको मिरर है, स्पेरिकल मिरर, रिफ्लेक्टिंग सरफेस है. ओके, नाउ इसमें से मैं पार्ट ऑफ द स्पीयर आई कट, part of the sphere I'll cut. Okay, that's why we'll get a two types of mirrors we'll get. Okay, part of the what are the two different types? Concave, convex. Concave, convex. Concave, convex. Okay, so I will draw, you tell me concave, convex. Okay, what is the first one, what is the second one? First one try करो, एक एक पूछूंगा. Janvi, which one is? Side is like the bulged. Okay. Where is it bulged? Okay, bulging है ना ये वाला, ये bulging है. Part of the sphere I'm talking. I Yeah, think try करो. it is convex. First one is? Convex. Okay, convex. Second one is? Concave, I think. Okay. Next, those are not here, raising hands, I'll ask. Okay. Shavya, try करेगा? Sir, I think first one is concave. Okay, concave and convex. Yeah. Bhavani? So the first one's concave and convex. Okay, this Second one one's is convex. Okay. Adya, Srinidhi, try करो. Sir, I Which one think the first one's concave, the second one's convex. Okay, yeah. Tanishka? Sir, we didn't mark the reflecting surface. Yes, that is the important thing. Okay, this is not a concave, this is not a convex. Sir, I asked for the bulge side. पर उसको बोलने का थोड़ा एक्सपेंड Sir, करके I बोलने. asked for the bulge side. Yeah, see, actually क्या है, ये if I put a non-reflecting surface, मतलब पेंट करूंगा suppose, then we can say it is concave mirror. By seeing, that's why whenever you draw like normal, it can, देखो इधर मेरे पास if you have without non-reflecting surface, मेरे पास magic करूंगा बोल के, I will tell this is a convex mirror. इधर जाके इधर घूमे तो I घुमाऊंगा, hey I have concave mirror, ऐसे बोलूंगा. ऐसा नहीं, only one mirror one time only. So that means if इसको non-reflecting surface मतलब इधर paint करूंगा, then it is convex mirror. So आपको this is right actually. So this is concave mirror, this is convex mirror. Okay. इसको people को confuse होगा एग्जाम में, अरे concave convex, अरे बहुत दिन हो गया, concave क्या है, concave. You can I will tell one word, you can remember initially, बाद में आदत पड़ जाएगा. Okay. Concave, cave means गुफा. देखो गुफा is there here, गुफा. Cave, concave. Okay. So गुफा वाला में reflecting surface is there. This is non-reflecting surface. Okay. Similarly इधर भी ये convex है ना, outer side will be the reflecting surface, inside will be the non-reflecting surface. इसका उल्टा, like C जैसा, C is convex. Okay. So उसका definition देखेंगे concave को. Concave का definition क्या है? Spherical surface whose reflecting surface is curved inwards are called as concave mirror. Whose reflecting surface is curved inwards curved है, उसको रिफ्लेक्ट, मतलब लाइट डालने से इनसाइड वाला झुम झुम डाल के जाएगा, आउटसाइड तो पेंटेड, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस बोलते हैं उसको. Okay. Similarly, copy it. So one second. Yeah. सर अभी आपका बैकग्राउंड का मतलब पूरा वाइट होगा, बैकग्राउंड लगा ना तो आपका रूम ऐसा. सर लाइट बहुत ज्यादा है. क्या क्या?
सर बहुत सारे लाइट ऑन किए हैं इसमें। ओहो, थर्मल लाइट देखो, दिस इज कॉल्ड मल्टीपल रिफ्लेक्शंस में समटाइम्स हम लोग सोचेगा कि ज्यादा लाइट आएगा, बट थोड़ा इमेज विल बी नॉट प्रॉपर। देखो इन लोगों का सबका देखा ना, थोड़ा दिख रहा है। आई वांट टू सी लाइक सो दैट आई कैन आउटसाइड देखेगा तो कहीं से आइडेंटिफाई कर सकते हो शावे बोल के। नो यू कांट एबल टू आइडेंटिफाई। ओके, चलो नो प्रॉब्लम। नाउ सेम वे वी विल सी कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर में spherical surface whose reflecting surface is curved outwards. देखो, whose reflecting surface curved outwards is called convex mirror. थोड़ा मैथ्स में मॉडल्स करके देन आई विल गो फॉर केमिस्ट्री में बीच बीच में। ओके, घर में कॉनकेव मिरर कॉन्वेक्स मिरर है? जानवी, you have convex concave mirror at home? No. Anybody have concave mirror, convex mirror? Sir, No. I guess we might be having in our spectacles. Spectacles में that is called mirror नहीं है, lenses. मिरर लगाए तो कला सीगा, हमारा आंख को ऐसे दिखेगा, बाहर तो नहीं दिखेगा। So the bigger in a car, no. हाँ Car. हाँ, कार में ओके, बट जनरली स्मॉल घर में। हाँ Sir, like spoons. हाँ, स्पून्स आर देयर राइट। घर में यू हैव स्पून बिसाइड, लेके आओ स्पून्स को। तो अच्छा स्पून ले लो, खाने वाला स्पून नहीं, थोड़ा अच्छा ले लो सो दैट यू कैन सी। नो, सबके पास बाजू में है स्पून्स, कार है क्या, आराम से एंजॉय कर रहे हैं, सबके पास बाहर रेटिंग बोल के देख रहे हैं तो लोग। लेके आओ स्पून, लेके आओ स्पून। हाँ सिद्धार्थ, लेके आओ स्पून। Yeah, let them come. नदिक लेके आया स्पून? ओके, नाइस। फोर्क मत लेके आओ, फोर्क्स नहीं है, स्पून। ये लोग कितना किलोमीटर दूर में है, इन लोग का घर में जाके लेके आने के लिए कितना टाइम लग रहा है? लेके आ गया सब लोग? ओके, सब आ गया, आ दिया। हाँ देखो, स्पून में द इफ यू कीप द स्पून लाइक दिस, दिस फ्रंट पार्ट इज नथिंग बट कॉनकेव, ओके, एंड बैक साइड इज नथिंग बट कॉन्वेक्स, राइट? ओके, आप कॉनकेव में विच इमेज इज फॉर्मिंग, देखो एक बार आपका ये देखो स्पून में, वेदर आप सीधा दिख रहे हैं उल्टा दिख रहे हैं? सर उल्टा। उल्टा दिख रहे हैं, दैट इज कॉनकेव में उल्टा आएगा, रियल एंड इन्वर्टेड। ओके, उल्टा करो, कॉन्वेक्स में देखो, कॉन्वेक्स में सीधा दिख रहा है, सीधा। सीधा दिख रहा है। हाँ,
कॉनकेव में दैट्स व्हाई वी आगे में वी हैव सम रूल्स आर देयर, रूल्स में आपको हर रूल में वी विल गेट रियल एंड इन्वर्टेड, बट एक केस में वर्चुअल इरेक्ट आएगा, एक केस में। ओके, कॉनकेव में एक केस में वर्चुअल इरेक्ट आएगा। कैसा? इफ यू ब्रिंग वेरी क्लोजर टू द आई, देख एक बार वेरी क्लोज टू आई, आराम से कॉन्सेंट्रेट करो, डोंट गेट हेडेक्स, धीरे लेके आओ, यू कैन सी द, आपको सीधा दिखेगा, बहुत नजदीक लेके आने का। ओके, उसमें यू कैन सी योर कट योर आईज और समथिंग, यू कैन सी, मतलब सीधा दिखेगा आपको, बट दूर में तो कंपल्सरी उल्टा दिखेगा। एक ही केस में आपको सीधा दिखेगा इन कॉनकेव, बट कॉन्वेक्स में ऑलवेज क्या होगा? सीधा दिखेगा, वर्चुअल इरेक्ट कॉन्वेक्स में। वो आगे रूल्स में आने वाला है, समझ में आ रहा है? सो जब भी एनीबॉडी आस्क्स लाइक यू हैव कॉन्वेक्स मिरर कॉनकेव, कैन सम स्पून इज देयर, वी हैव बोल के बोल सकते हैं। ओके, सो देखो ऐसा एक स्पून में ऐसे देख रहे हैं, सो उसको कैसा दिख रहा है? उसको देखो उल्टा दिख रहा है स्पून। सेम वे इफ यू सी इन दिस सरफेस, आपको सीधा दिखेगा, राइट? दिस इज कॉन्वेक्स इज ऑलवेज वर्चुअल इरेक्ट, कॉनकेव इज रियल एंड इन्वर्टेड, एंड आल्सो वर्चुअल इरेक्ट इन स्पेशल केस, वन केस में, वो केस वाला एग्जाम में पूछेगा। ओके, वो केस क्या है? विल सी ऑल द रूल्स एंड रेगुलेशंस का पूरा। तो मैं जब तक नाउ इसका आगे में वी हैव टू स्टडी ऑल द टर्मिनोलॉजीज वगैरह, वो नेक्स्ट क्लास में हम लोग डील करेंगे। ओके, सो इधर तक पढ़ो एक बार जो भी है। आई आस्क